Hello everyone, this is your RSR sir. We are in Vidyaradhana Nanded Center and we are discussing about physics, rotational motion, advanced questions in our program Excellence in Physics. कंटिन्यू करेगा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था अभी तक और कुछ अच्छा क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे. लेट्स सी दिस क्वेश्चन gave in advanced JEE 2017. ये पूछ रहा है a wheel of radius r and mass m, so wheel का radius r है, mass m is placed at the bottom of a fixed step of height r as shown in the figure. A constant force is continuously applied on the surface of the wheel so that it just climbs the step without slipping. Consider the torque about an axis normal to the plane of the paper passing through the point Q. इसी पॉइंट से जाने वाला एक्सेस को टॉर्क मानो बोल रहा है इधर. Which of the following options correct? So more than one option correct है. So advance का multiple answer question है. First option देखेंगे, if the force is applied normal to the circumference at point X, then torque is constant. So जब इधर फोर्स एक्ट करेगा नॉर्मल टू सरफेस, जब नॉर्मल टू सरफेस अप्लाई करेगा या तो सीधा एक्सेस से जाएगा, ऐसा सेंटर से जाएगा. सो ऐसा जा रहा, दिस फोर्स इज एफ दे सेड, सो दिस इज फोर्स लाइन एंड अबाउट दिस एक्सेस आपको टॉर्क चाहिए तो, अबाउट दिस एक्सेस टॉर्क चाहिए तो ये लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो एंड दिस इज आर, ईयर से इधर तक रेडियस आर. सो ये वैल्यू कितना होगा, ये कुछ तो एंगल है इधर थीटा. इफ दिस इज थीटा, दिस इज गोइंग टू बी, इट इज आर, दिस इज आर साइन थीटा, सो दैट इज आर साइन थीटा. सो अभी अबाउट दिस पॉइंट इसके वजह से आने वाला टॉर्क होता है. सो आई एम चेकिंग दैट फर्स्ट स्टेटमेंट ये, so that is F force into perpendicular distance, that is R sin theta. ये टॉर्क, इसके वजह से आने वाला टॉर्क हमको क्लॉकवाइज में घुमाने को कोशिश करेगा. ये टॉर्क हमको ऐसा क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने को कोशिश करेगा. एंड इधर mg लाइन ऐसा है. सो R बार क्रॉस F बार mg के वजह से आने वाला टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने को कोशिश करेगा. सो ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने को कोशिश कर रहा, ये वाला क्लॉकवाइज में घुमाने को कोशिश कर रहा. सो नेट टॉर्क एक्सप्रेशन क्या होता है, दिस एफ sin थीटा माइनस दैट mg इनटू r. ये होगा नेट टॉर्क, दिस इज गोइंग टू बी टॉर्क नेट. सो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, if the force is applied normal to the circumference at point X, then torque is constant बोल रहा है. Is this expression is constant? Check it. Is that expression constant? No, because that mg is constant, r is constant, f also they said constant, but this theta is not constant. If you turn this wheel little bit, थोड़ा घुमाओ, थोड़ा ऐसा घुमाया तो ये फोर्स, ये लाइन कैसा होगा, ऐसा घुमाया तो ये लाइन ऐसा जाएगा. जब ये लाइन ऐसा आएगा ये थीटा कम होते जाएगा. ये एफ वैल्यू ऐसा आया तो ये पोजीशन थोड़ा आगे आएगा. सो ये पोजीशन मान लो फॉर एग्जांपल ये एक्स पोजीशन पी पोजीशन तक आया. जब ये एक्स पोजीशन पी पोजीशन तक आएगा ये फोर्स लाइन क्या होगा, ऐसा आएगा, मीन्स ये थीटा कम हो जाएगा. सो थीटा कम होगा तो ये पूरा वैल्यू कम हो जाएगा. सो ये पूरा वैल्यू कम हो रहा है, इसलिए टोटल नेट टॉर्क वैल्यू कम होते जाएगा. दिस टॉर्क इज गोइंग टू डिक्रीज. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ऑप्शन ए में कांस्टेंट बोला, गलत है. ऑप्शन बी चेक करेंगे. ऑप्शन बी में इफ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली एट पॉइंट एस, सो पॉइंट एस पे टेंजेंशियली अप्लाई किया तो then torque is not equal to 0. ऐसा दिया हम डायग्राम. so this is that, this is the step and here is the step. yes, so ये तो डायग्राम है.
इधर पॉइंट एस से, सो फोर्स ऐसा अप्लाई किया एफ, जब फोर्स ऐसा अप्लाई करेगा फिर फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट क्यू, हियर इज द एक्सेस, एक्सेस से फोर्स लाइन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला, दिस इज आर, so this is also r, and here is center of mass, so mg ऐसा. Now what about this torque? Now in this question again torque they are saying not equal to 0, but the wheel never climbs the step. So इधर नेट टॉर्क कितना, ये फोर्स की वजह से आने वाला टॉर्क ये सिचुएशन में F इंटू आर, एंड mg की वजह से आने वाला माइनस mg इंटू आर, एंड दे सेड दिस इज नॉट इक्वल टू 0. हाँ, नॉट इक्वल टू 0 हो सकते हैं क्या? यस, हो सकता है. ये तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है. ये फोर्स मैग्नीट्यूड आर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो देन दिस इज गोइंग टू बी नॉट इक्वल टू 0. बात सही है. एंड इधर क्या बोल रहा, बट द व्हील नेवर क्लाइम्स द स्टेप. ये व्हील कभी ऐसा उठ नहीं सकता बोल रहा है. क्या ये बात भी मानेगा हम? नो, बिकॉज इफ दिस इज मोर, if it is more, if it more value, then what will happen? So it starts climbing. So wheel can slide, wheel can climb. ऐसा हो सकता है. So option B also wrong. What about option C? If the force is applied normal to the circumference at point P, then torque is 0. This is point P they gave. P point पे नॉर्मली फोर्स अप्लाई किया तो बराबर, अब P पॉइंट पे नॉर्मली फोर्स अप्लाई किया ना ऐसा, so this force line passes through Q. When force line passes through Q, there will be no perpendicular distance, so option C में torque is going to be 0. That is what they said in option C. If the force is applied normal to the circumference at point P, then torque is 0. So ये पॉइंट पे फोर्स लगाया तो सीधा ऐसा पॉइंट Q से जाएगा, फोर्स ऐसा Q से जाएगा, no perpendicular distance, then torque is 0. Perfectly correct. Check last option. If the force is applied at the point P tangentially, so last option में क्या कह रहा है, so wheel को ऐसा wheel है, so this is that wheel, step. So tangentially force apply किया तो that means ऐसा force apply किया तो, so अब क्या होगा, about this point, this is diameter 2r, so torque क्या आएगा F की वजह से, F into 2r, and minus mg की वजह से सेंटर ऑफ मास से जाएगा mg, so mg की वजह से mg into r, so F into 2r minus mgr. If this F into 2r value is greater than mgr, then it can climb. Then torque decreases continuously as the wheel climbs. Torque decreases continuously बोल रहा है as the wheel climbs. हम ऐसा एक जगह लेंगे, सी व्हील समझो इसी पोजीशन तक आ गया, व्हील ऐसा पोजीशन पे आ गया, ओके. सो ये पोजीशन पे F इज दिस, P पॉइंट इधर तक आ गया, इधर का P पॉइंट थोड़ा क्लाइंब हो के ऐसा 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 आया, सो P पॉइंट ऐसा इधर तक आ गया, सो दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास पोजीशन. फिर सेंटर ऑफ मास से नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स mg रहेगा, फिर mg रहे तो अभी इधर से इधर तक ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू कम हो गया क्या, बढ़ गया क्या? सो पहले ये वैल्यू तो r था mg से इधर तक, जैसा ये ऊपर गया था ये वैल्यू कम हो गया,
एंड व्हाट अबाउट दैट वैल्यू, ये वैल्यू न्यूमेरिकली कितना होता? सो दिस इज रेडियस आर, समझो ऐसा ऊपर को टिल्ट हो गया, ऊपर को घुमाया हमने, समझो थीटा एंगल घूमे। सो फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा होगा तो ये ट्रायंगल को मैं जूम करके डालता हूं ऐसा सी। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r and this is theta and this is r. So now what about the smaller value? Smaller is r sin theta. So this is the torque, this is torque initial situation में। अभी ये सिचुएशन में टॉर्क कितना होगा? सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एक्सप्रेशन टॉर्क, सी ये एक्सप्रेशन का टॉर्क कितना होगा देखेंगे। हियर आई एम राइटिंग, प्लीज ट्राई टू फोकस। मैं मैक्सिमम ये काम कर रहा हूं, क्वेश्चन कौन सा स्लाइड में है उसी स्लाइड में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने को कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन एक ही जगह पे दिखे, थोड़ा बेहतर समझेगा। And these are advanced questions, completely conceptual analysis important। ये कि बेस लेवल पे आपको रोटेशन मोशन होने को बाद आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा बेस्ट में समझेगा। चलो देखेंगे। सो अभी ये क्या होगा इधर इस सिचुएशन में? सो इसके वजह से आने वाला टॉर्क इज F इंटू 2R माइनस mg की वजह से आने वाला टॉर्क mg इंटू दिस स्मॉल r, that small r is r sin theta। अच्छा अभी मुझे बताइए, जैसा ये ऊपर जाते रहेगा ये थीटा वैल्यू क्या होगा? इनिशियली ये r ऐसा था, सो इधर वाला ऐसा आ गया, दैट मीन्स इनिशियली ये r वैल्यू कितना, ये नीचे लाओ। सो इनिशियली ये r के साथ mg लाइन 90 डिग्री कर रहा था, ऐसा जैसा ऊपर जा रहा है ये थीटा कम 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 ओके mg लाइन r दोनों बैलेंस हो जाएगा, तब थीटा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस r इज डिक्रीजिंग or increasing? This r is going to be decreasing। सो क्वेश्चन में अभी चेक करो ये वैल्यू बराबर होता है क्या नहीं। r डिक्रीज करो, theta decreasing, this theta is decreasing। I hope you understood perfectly। Again I will explain। See, initially ऐसा पोजीशन है, r ऐसा था, ये r जैसा व्हील क्लाइंब किया, जैसा व्हील ऊपर को क्लाइंब किया, ये r ऐसा 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 होके इधर तक आ गया। दैट मीन्स इनिशियली r को mg को बीच में 90 डिग्री, जैसा ये r ऊपर जा रहा है ये r mg के साथ एंगल 90 से भी कम हो रहा, कम होके इतना तक आया, और थोड़ा आगे जाया तो ये mg लाइन r को बैलेंस हो जाएगा, तब थीटा 0 होता है। सो ये सिचुएशन में थीटा वैल्यू डिक्रीज हो रहा, थीटा डिक्रीज हो रहा, साइन फंक्शन पूरा डिक्रीज होता। सो ये पूरा वैल्यू डिक्रीज हो रहा, सो इसमें से ये वैल्यू कम हो रहा है, सो टोटल वैल्यू इज गोइंग टू बी इंक्रीज। सो इसी सिचुएशन में टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में कहा इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट पी टेंजेंशियली देन टॉर्क डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, बोला नो रॉन्ग, increases continuously। So our right answer is only C, only C। So nice question and a nice beautiful explanation। I hope you understood perfectly। क्वेश्चन को अच्छा तरीका से समझ के रख के ऑप्शन ए चेक किया तो ऑप्शन बी चेक किया, ऑप्शन सी चेक किया एंड ऑप्शन डी आल्सो चेक किया। मैं ऐसा करता हूं सभी स्टूडेंट्स को, सिर्फ सुनने से सब्जेक्ट नहीं आएगा बच्चे। सो इधर आपको एडवांस क्वेश्चंस मिल रहा है अच्छा तरीका से, सो क्वेश्चन आप फेयर करके एंड सॉल्यूशन भी अच्छा तरीका से समझ के इन योर ओन लैंग्वेज यू कैन टेक द एक्सप्लेनेशन, देन इट इज यूजफुल टू यू। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सी हियर इज अनदर वन क्वेश्चन व्हाट दे गिव इन 2019 JEE एडवांस। ये थिन रॉड and a thin and uniform rod of mass m and length L is held vertical on a floor with large friction
The rod is released from rest so that it falls by rotating about its contact point with the floor without slipping. Which of the following statements correct? When the rod makes an angle 60 with the vertical G is acceleration to gravity. So more than one answer correct again. अच्छा कुछ नहीं. So पहले जो बोला उसको हम डायग्राम लेंगे. So this is the diagram. क्वेश्चन में ये कहा ये रॉड ऐसा नीचे गिर रहा है. So ऐसा पोजीशन को आ गए हम. So means रॉड ऐसा रोटेटरी मोशन में रॉड ऐसा घूमता रहेगा. So then this angle they said 60 degree. Now here is that position. So initially center of mass इधर होगा and finally center of mass इधर है. मतलब सेंटर ऑफ मास ऊपर से नीचे को आया. सो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए. हियर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, ओनली रोटेशनल मोशन है. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. इसके लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. सो दिस डेल्टा PE should be equal to delta KE. अच्छा डेल्टा PE कितना? इनिशियली सेंटर ऑफ मास का हाइट L/2 माइनस फाइनली सेंटर ऑफ मास का हाइट ये L/2 का कंपोनेंट दिस साइड. सो L/2 इधर से इधर तक L/2 है. L/2 का कंपोनेंट ऐसा लिया तो L/2 cos 60. सो दिस इज गोइंग टू बी हाइट डिक्रीज्ड. तो आगे mg ऐसा ही रहेगा. And kinetic energy gained is initially angular velocity is 0. तो initial angular velocity 0 होगा तो final angular velocity that is half I omega square. So initially 0. So this is change in kinetic energy. So अभी क्या होगा? L/2 कॉमन किया तो हमको mg L/2 in bracket 1 minus cos 60 is 1/2. So that equal to half I is moment of inertia of the rod about a axis which is passing through one end. So इसको moment of inertia होगा ml square by 3 and into omega square. चलो mm कैंसिल हो जाएगा, L एक बार कैंसिल हो जाएगा, 1 minus 1/2 रहेगा. So this 1/2 and this 2 got cancel, 2 cancel. इधर 1/2 बचे. सो क्या बचे? एम भी कैंसिल हो गया. सो G/2 बचे इधर साइड एंड दैट इज इक्वल टू इधर L बचे. L एक बार कैंसिल हो गया तो L बचे एंड नीचे 3 बचे एंड ओमेगा स्क्वायर इज देयर. सो ओमेगा वैल्यू व्हाट यू आर गेटिंग 3G/2L अंडर रूट. दिस इज गोइंग टू बी ओमेगा. सो हमको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड आया है. So in these options they gave angular velocity, this is 3G/2L. The angular speed of the rod will be 3G/2L. Perfect. So option C correct है. और बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे. बेसिक क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगेज मैंने इधर अटैक किया बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. इसमें फ्रिक्शन का सपोर्ट पकड़ के हियर इज द फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन डायरेक्शन किधर होगा गेस कर सकते हैं. अब विदाउट फ्रिक्शन होगा तो ये ऐसा स्लिप हो जाएगा. सो फ्रिक्शन इधर से एक्ट होता. सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन सपोर्ट इट इज एबल टू फॉल. सो और एक दूसरा ऑप्शन देखो. इधर ऑप्शन ए में क्या बोला? द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड सेंटर ऑफ मास विल बी 3G/4. सो दे आर आस्किंग यू रेडियल एक्सेलरेशन. ये आर रेडियल एक्सेलरेशन के लिए आपको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना होगा. अल्फा मालूम होगा तो रेडियल एक्सेलरेशन नो नीड ऑफ द अल्फा. इफ यू वांट रेडियल एक्सेलरेशन देन आर ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा आ गया. सो दिस इज ऑप्शन सी करेक्ट. एंड नेक्स्ट रेडियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर यू कैन से. सो आर इंटू ओमेगा को स्क्वायर किया तो सो दिस इज गोइंग टू बी 3G/2L. सो 3RG/2L आएगा. But the radial acceleration of the rod's center of mass will be, they gave 3G/4. No, this is wrong.
आपको तो 3G R value, what about R? R is nothing but about this axis it is rotating, no? So about this axis is rotating, then center of mass का R क्या होगा? L/2 होगा. For center of mass they are asking, no? For center of mass को about this axis it is rotating. So that means center of mass circle तो ऐसा आ रहा है. That means this is the radius of the center of mass. So that is equal to R जगह पे L/2 into 3G by, so 2L, now it is going to be LL cancel 3G by 4. Perfect. So 3G by 4. ऑप्शन ये करेक्ट. थोड़ा केयरफुली आराम से चेक करना. ऑप्शन बी में बोल रहा है द एंगुलर एक्सलरेशन ऑफ द रॉड विल बी 2G by L. एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा चाहिए. सर अल्फा के लिए क्या करेंगे हम? सो अल्फा के लिए आपको थोड़ा टॉर्क को बारे में सोचना होगा. चलो टॉर्क को बारे में सोचेंगे. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑप्शन बी हियर. सो एराड ऐसा पोजीशन पे आ गया. सो राइट, दिस इज द पोजीशन एंड हियर इज द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास से नीचे को ग्रेविटेशन फोर्स mg रहेगा एंड मेरे को चाहिए एंगुलर एक्सलरेशन चाहिए. सो अल्फा चाहिए. सो व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? हियर दे गिव 60. इफ इट इज थीटा, दिस इज 60. देन हियर आल्सो थीटा. And what about this value? Then this is L/2. This L/2 this is theta. Then this is also theta. And you say this is x. So x will be equal to this value L/2. And L/2 this is, and it is opposite side. So L/2 sin theta. So x आ गया. So torque कितना होगा? So torque is going to be I alpha. So torque is force mg into perpendicular distance x. So x is L/2 sin theta. Theta is how much? Theta equal to 60 degree they gave. So sin 60, that equal to I. So moment of inertia of the rod. Moment of inertia of the rod about an axis passing through one end. So this is going to be m L square by 3 into alpha. Let's see, alpha एक बार कैंसिल, LL एक बार कैंसिल हो गया and MB कैंसिल हो गया. sin 60 √3/2. So √3/2 L got cancel. Here already 2 is there. So 2 means it is going to be 4 and G is there. M got cancel, L got cancel. That is equal to either L बचे by 3 and alpha is there. So that implies alpha will be 3√3 G upon 3√3 G upon 4L. So this is, we are getting alpha. And here the angular acceleration of the rod will be 2G by L. 2G by L. Here we got 3√3 G by 4L. So no, it is not going to balance. Torque equal to I alpha. और दूसरा कुछ फोर्स है क्या हमको टॉर्क प्रोड्यूस करने को? हाँ, फ्रिक्शन फोर्स है. लेकिन फ्रिक्शन फोर्स के वजह से आने वाला टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस 0. फ्रिक्शन फोर्स तो ऐसा है, ये फ्रिक्शन फोर्स तो इसी पॉइंट से जा रहा है. सो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क नहीं आएगा. सो दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन वी आर गेटिंग. सो दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन बी इज रॉन्ग. What about option D? The normal reaction force from the floor on the rod will be this. अच्छा, so normal reaction को बारे में हमको चेक करना पड़ेगा. The normal reaction force from the floor on the rod will be. So nice point है. कैसे चेक करेगा नॉर्मल फोर्स? तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट स्लाइड को जाना ही पड़ेगा. मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, एडवांस क्वेश्चन है, फिर भी हर स्लाइड पे उधर सॉल्यूशन आपको लिखने को मैं कोशिश किया था. बट टू हैंडल दिस ऑप्शन डी
वी नीड टू चेंज द स्लाइड. चलो चेंज करेंगे. हमको आया इधर एक्सेलरेशन 3g/4, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन. सेंटर ऑफ मास का रेडियल एक्सेलरेशन ऐसा रहेगा. अल्फा आ गया, अल्फा इंटू आर मल्टीप्लाई किया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा ऐसा. चलो लेट्स सी क्या होगा. सो ऐसा है रॉड, दिस इज फ्लोर. सो रॉड ऐसा तक आ गया. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी सेंटर ऑफ मास पोजीशन. सो सेंटर ऑफ मास पे नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स mg. सो इधर ये सेंटर ऑफ मास हमको ऐसा सर्कुलर पाथ में जा रहा है. सो इधर आपके ऐसा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा. सो इधर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा. दिस इज गोइंग टू बी टेंजेंशियल at. And as along towards the center of the circle, रेडियल एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी आ चुके हैं. ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेडियस इनटू अल्फा. सो रेडियस वैल्यू इज L/2 दिस, and alpha already you got here 3√3g/4l. So this is 3√3g/4l. So it is going to be LL cancel, then 3/8 √3g, you got tangential acceleration. And here is 60 degree, then here also 60 degree, theta, this is also theta. And n, m ऐसा mg डाउनवर्ड है. n तो हमेशा रॉड पे ऐसा mg को अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता. सो ऐसा n एक्ट होगा. सो अभी AR कंपोनेंट take this side, this is AR, so AR component this side AR cos theta, this is AT. If it is theta, then this is also theta. So and this is on tangent perpendicular theta, 90 minus theta. So this is T90 theta, then this is 90 minus theta. So AT component this side, AT, here angle is 90 minus theta, that's why AT sin theta you will get. Theta value how much? Theta is going to be 60 degree, they gave already. So अभी इसी डायरेक्शन में फोकस करो. सो न्यूटन इक्वेशन लिखेंगे हम. इसी डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स mg and minus upward force n is equal to mass into acceleration this side, that is a r cos theta plus a t sin theta. You know at value and already you got ar value. AR value you got 3g/4. So AR value is 3g/4. You know AR value and you know AT value, and net acceleration either theta is 60 degree. So what we are going to get, please n value, n take that side, remaining whole bring this side. So this is going to be mg minus n is equal to m into, in bracket, AR is 3g/4. So 3g/4 into cos theta, cos 60, 1/2 plus AT is 3/8 √3g into sin 60 √3/2. So √3 it is going to be 3. 3 is 9. So 9g/16. So the only we left is simplification. So properly simplification किया तो हम किधर n value आ जाएगा easily. I always suggest you to focus on concept, not on simplification, because आप concept पे अच्छा ध्यान नहीं रखे, just आप ये calculations पे ध्यान रखे, then there will be no use. Option D is a beautiful analysis. This is option D. Option D में हमने ये किया था, concept exactly apply किया था, then हमको ऐसे expression आया. So थोड़ा ये value भी निकालेंगे, इतना काम किया तो ये कितना बात है, 8 है. So 3g/8, 3g/8 if you take common, so it is going to be mg minus n is equal to m into 3g/8 came outside. So 1 बचे इधर plus 3g/8 बाहर चला गया, √3 3/2 बचे.
So this is mg into 3 by 8 in bracket, so 5 by 2. So this is 2 plus 3, 5 by 2. So then this is mg minus n. So figure out n value. So mg इधर है, mg भी कॉमन करो. So bracket में 1 minus ये पूरा इधर आया. So this is 5 3s 15 Guruji by 16. So mg came out. So 15 by 16 and here 1, that equal to n. So this is mg in bracket LCM 16. So 16 minus 15, 1. So that is n. Then n value will be mg by 16. What they gave, check it. Wow, perfect. So they gave correct one. So D also right. The normal reaction force from the floor on the rod will be mg by 16. Option D is beautiful one. So पहले वाला थोड़ा easy है, but option D is conceptual analysis. This is the best one. चलो और एक क्वेश्चन देखेंगे. So this giving J Advanced 2020. So ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है, लेकिन दिखने को बच्चे को डराता है, लेकिन बहुत इजी वाला है. सो ये क्वेश्चन में ये कहा गया, ऐसा फुटबॉल है, वो इनिशियली ऐसा इंक्लाइन प्लेन नहीं था, पहले ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में था. सो दिस इज 2r दे गिव, दैट मींस एंड दिस वैल्यू फ्रॉम हियर टू हियर दे गिव 2r. सो मतलब इधर से इधर तक कितना है, छोटा r है. अच्छा, तो फिर अभी इसको इसी पोजीशन से ऐसा 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 घुमा रहा है. कुछ तो एक पोजीशन को जाने के बाद ये क्लाइंबिंग शुरू होता. देखो क्या बोल रहा है. One end of the plank is now lifted so that it gets tilted, making an angle theta from the horizontal. So इधर ऐसा ऐसा लेके गया तो इधर एंगल थीटा, as shown in the figure below. The maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plank satisfies. अच्छा, इधर roll down नहीं होना है, does not start rolling down. So rolling down नहीं होना. बच्चों पहले ये देखो, ये rolling down होता कब है, rolling down होगा कब है. So this is C, this is small r, and this is radius of the ball, this is capital R. ये ऐसा इंक्लाइन को उठा के गया ना, ये की एंगल को पहुंचने को बाद ये कैपिटल आर जो है इसका mg इनिशियली कैसा, दिस इज mg सीधा डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स mg. जब ये mg लाइन, ये टॉपलिंग का थ्योरी में आप लोग सीखे वाला बात है. टॉपलिंग का थ्योरी में जब भी mg लाइन about this axis it is going to topple. mg लाइन जब इससे जाएगा तब ये टिल्ट होने को चांस है. मतलब मैं डायग्राम को ऐसा लेता हूं, ऐसा है इंक्लाइन. सो नाउ हियर mg is passing like that. So now this is the ball. Now this is r. So फिर about this axis ये छोटा r है पहले, ये छोटा r वैल्यू क्या होगा, इनिशियली ये छोटा रहता था, दिस छोटा r वैल्यू ये थीटा होगा. तो दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा. तो ये इंक्लाइन प्लेन का लाइन ऐसा एक्सटेंड हो रहा है. दिस इज 90 माइनस थीटा, हियर आल्सो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, दिस आल्सो 90 माइनस थीटा. सो दिस इज r. सो ये वाला इसको इधर तक, दिस इज ये वाला छोटा r है. सो इसको थोड़ा जूम करके मैं ड्रा करता हूं, देखो. सो दिस इज r and here it is a small r and this is that, ये वाला small r है. ये 90 minus theta, this is also 90 minus theta. So it is 90 minus theta, this is 90 degree, so this is theta. Theta 90 minus theta, इसको opposite angle ये वाला 90 minus theta, मतलब
इधर आने वाला एंगल होता है थीटा। सो इसको मैंने थोड़ा जूम किया था, जूम। सो फिर ऐसा आ गया, ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर टॉपलिंग। जब भी एमजी लाइन ये पॉइंट ऑफ एक्सेस से जाएगा, इसको बाद मूवमेंट में ये टॉपल हो जाता है। सो दिस इज टॉपलिंग सिचुएशन। ये आप लोग थ्योरी में सीखे होगा मुझे लगता है। सो देन हियर साइन थीटा लगाओ, opposite side by hypotenuse, sin theta equal to small r by capital R. This is the condition for toppling. टॉपलिंग नहीं होना, ये सब रोल डाउन नहीं होना, रोल डाउन नहीं होना बोले तो मैक्सिमम एंगल इतना है, इससे ज्यादा नहीं होना। दिस इज मैक्सिमम एंगल। यार थीटा हमको जो ये सिचुएशन में आ रहा है, दिस इज मैक्सिमम एंगल। इससे ज्यादा हुआ ना, थीटा इससे ज्यादा ऐसा इंक्लाइन हुआ ना, ये रोल डाउन हो जाता। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन द प्लैंक सेटिस्फाइज। सो थीटा वैल्यू पूछ रहा है। सो sin थीटा इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R, दिस इज दैट। सीधा सीधा क्वेश्चन। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बात ऐसा है कि आंसर निकालना मेन बात नहीं है, ये एडवांस क्वेश्चंस आपको ऐसा सीखो, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस पकड़ो, देन आपका विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज होता है। जब तक आपको विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज नहीं होगा, फिजिक्स पे कमेंट आएगा ही नहीं। फिजिक्स का पर्पस है स्टूडेंट का विजुअल एनालिसिस बढ़ाने के लिए एंड विजन इंक्रीज करने के लिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स इन ए बेस्ट वे। सो आज का वीडियो में इधर क्लोज करता हूं, then we will continue in our next video. This is RSR sir. We are discussing excellence in physics, beautiful conceptual videos, and here we are discussing rotatory motion, previous advanced questions. मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।